So, hello everyone, my name is Akshay and if you're new to this channel, please like, share and subscribe and hit the bell icon. तो यार शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन का नाम है कॉम्प्लीमेंट। तो आज है जीएफजी पीओटी का डे 54 एंड आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है और आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, देन इट्स वेल एंड गुड। फिर तो साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्या अप्रोचेज हो सकते हैं। तो मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग str इन द सिंगल ऑपरेशन यू कैन चूज टू इंडेक्सेस L and R such that L and R should belong in the range of 1 to n and the complement the characters between L and R। ओके मतलब जो भी कैरेक्टर्स L और R के बीच में है इंक्लूसिव हमें उसे कॉम्प्लीमेंट करना है। बाय कॉम्प्लीमेंट वी मीन चेंज द कैरेक्टर 0 to 1 वाइस वर्सा। ओके, योर टास्क इज टू परफॉर्म एट मोस्ट वन ऑपरेशन सच दैट इन द फाइनल स्ट्रिंग, एट मोस्ट वन ऑपरेशन मतलब एक या एक से ज्यादा, राइट? सच दैट इन द फाइनल स्ट्रिंग नंबर ऑफ वंस इज मैक्सिमाइज। ओके, मतलब हमने वो इंडेक्सेस को चूज करने हैं जिसको फ्लिप करने के बाद नंबर ऑफ वंस मैक्सिमाइज है। सो देयर इफ देयर इज नो नीड टू कॉम्प्लीमेंट दैट इज ऑल स्ट्रिंग्स कंटेन वन, देन रिटर्न -1, else return the two values denoting L and R। if there are multiple solutions, return the lexicographically strongest pair of L and R। ओके ओके, तो इसका मतलब है यार कि अच्छा ओके सारे वन है तो हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है। और टेस्ट केस 0 एंड 1 है, तो आफ्टर कंप्लीट ओके, तो ये जो फर्स्ट है मतलब एल भी फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा और आर भी फर्स्ट इंडेक्स को, तो इन्होंने फर्स्ट मतलब 1,1 रिटर्न कराया है। ओके, तो हमारे स्ट्रिंग में जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, इन्होंने वन बेस इंडेक्सिंग से आंसर रिटर्न कराया है। ठीक है ठीक है ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या देखिए, 10 पावर 5 लाइक वी कैन गो टू मैक्स एन लॉग एन, और फिर उसके नीचे ही देखो एक्सपेक्टेड ऑफ एन भी दे रखा है। ठीक है यार। ओके, तो इस एग्जांपल से तो कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा है, एक अलग से अपना एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार मैं यहाँ पे एक वेक्टर इंटीजर आंसर बना लूँगा, उसमें मैं चेक कर लूँगा कि अगर सारे 1 हैं, तो हमें बस उस आंसर में एक -1 ऐड करके हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये तो पहली केस होगी इसकी, मतलब लाइक वी कैन से दैट इट्स स्टेप 1, चेक ऑल वंस इन एरे इन एसटीआर। ठीक है यार, बट हम एक केस लेते हैं जिसमें सारे 1 नहीं है और फिर कुछ ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ क्या कर सकते हैं। तो लेट्स से वी टेक दिस वन 1001। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ यार कि हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज 1 करना है, राइट? तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो जीरो का विंडो फाउंड कर लो, राइट? लेट्स से यहाँ भी जीरो होता, जीरो का विंडो फाउंड कर लो और उसे फ्लिप कर दो, 1 1 1 1 जीरो हो जाता। तो मैं क्या इन्फर कर पा रहा हूँ यहाँ से कि आई नीड फाइंड मैक्सिमम जीरोस विंडो लेंथ। को ये फाइंड करना है यार। और अगर लेट्स से एक और कंस्ट्रेंट है कि लेट्स से हमारे पास दो जीरो लास्ट में होते हैं, तो देखो ये विंडो लेंथ जीरो की ये विंडो लेंथ सेम है, तो हमें लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड करना है, राइट? तो इस केस में हमारा आंसर इसको नहीं फ्लिप करके इसी को फ्लिप करेंगे, तो इस केस में हमारा आंसर होता है 1 1 1 1 0 0, ऐसा हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है यार, तो ऐसे क्वेश्चन में ओ ऑफ एन में करना है, तो इसके डिजिट्स को फ्लिप करके देखे क्या यार, मतलब 1 है 0 0 1, राइट? तो लेट्स से हम इसे -1 कर देते हैं और इसे भी -1 कर देते हैं, ठीक है। And if we try to find something, let's say a sub array which has like what maximum sum, तो ऐसे में तो यार like I'll be able to find maximum window of 0 and 1, ये मुझे मिलेगा यार अगर मैंने जीरो को -1 फ्लिप कर दिया, तो ये तो काम नहीं आने वाला यार। तो ओके, तो लेट्स से हम फ्लिप करते हैं 1 को 0 एंड 0 को -1, तो हमारा ये था, राइट? अगर हम इसका ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 को हमने बोला था 0 माइनस, आई कैन सी दैट मैक्सिमम सब एरे अगर मैं निकालूं इसमें नेगेटिव पार्ट में, लाइक मैक्सिमम सब एरे बट इन लाइक नेगेटिव नेगेटिव वेट, है ना? मतलब मतलब -2 -5 -7 इस तरह के वेट्स में निकालो, ना कि पॉजिटिव में। ठीक है, तो ओके, तो मेरे को मिल तो जाएगी मैक्सिमम विंडो लेंथ ऑफ 0, मिल तो जाएगी अगर मैं कंसिडर करूँ मैक्सिमम सब एरे नेगेटिव वेट्स। तो ठीक है यार, इसका रिवर्सल करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम 1 को -1 रख लेते हैं एंड 0 को 1 रख लेते हैं।
तो हमारा 1001 स्ट्रिंग था, राइट? तो व्हाट वी कैन, इट विल बी -1 1 1 0। ठीक है यार। तो अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम सब एरे में ही करने की कोशिश कर रहा था, मैक्सिमम सब एरे विथ पॉजिटिव वेट है, मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव वेट, पॉजिटिव नंबर निकालने। तो अब मैं इसमें करूँगा यार, मैक्सिमम सब एरे यही है जिसका क्या आ रहा है, 1 को हमने -1 में कहा था, राइट? हाँ, तो 2 आ रहा है, राइट? तो मेरे को पता चल गया यार विंडो लेंथ, है ना, यहाँ से यहाँ तक होगा ये वाला। तो ठीक है यार, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बदल के हो चुका है। नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड मैक्सिमम सब एरे, है ना, साथ ही साथ हमें उसका विंडो के इंडेक्सेस भी चाहिए, लो आई से जे जो हमने फाइंड किया, राइट? तो देखो यार, मैक्सिमम सब एरे तो मैंने क्वेश्चन समझा रखा है कि कैसे होते हैं, ये ऊपर अभी भी लिंक आ रही है, वहाँ से दे सकते हो। तो उसका कोड कुछ इस तरह होता है यार कि मैं एक इंट सम बनाता हूँ, है ना, एंड देन व्हाट आई डू, फिर मैं उसमें क्या करता था कि फॉर इंट मैं ट्रैवर्स पर जाता था यार कि फॉर आई इक्वल्स टू आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एक कोड तो मेरे को याद ही है। तो मैं क्या करता था, सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ये मैं क्या लिख रहा हूँ यार, कैडेंस एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। ये जो हमें करना है ये एक वेरिएशन ऑफ कैडेंस एल्गोरिथम है बस। मैं ऐसा करता था एंड देयर वाज सम आंसर जिसमें मैं मैक्स स्टोर कर लेता था, किसका, सम एंड आंसर का। एंड एज सून एज माय आंसर गोज जीरो, लाइक लेस देन जीरो, आई अपडेटेड माय सम इक्वल्स टू जीरो, और ये एंड, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देते थे आंसर। ये था यार कैडेंस एल्गोरिथम का कोड। ये ऐसे वर्क करता है। तो आप इस वीडियो को देखो यार, मैं इसका ड्राई रन नहीं दिखाने वाला क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है नहीं, और क्योंकि मैंने पहली वीडियो बना रखी है इसलिए मैंने दिखा रहा, नहीं तो मैं इसका भी ड्राई रन दिखाया था आपको। तो वाई टू वेस्ट आर टाइम, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन ऊपर आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके देख लेना। ठीक है यार, तो ओके, बट हमें इंडेक्सेस भी चाहिए, राइट? तो लेट अस अज्यूम एन यार, तो हमें इंडेक्सेस भी चाहिए यार, तो हमें एक स्टार्ट भी पॉइंटर चाहिए होगा, एक हमें एंड पॉइंटर चाहिए होगा, हमें एक, हम जब जब अपडेट कर रहे हैं, राइट, हमें एक मैक्स सो फार वेरिएबल भी चाहिए होगा। ठीक है यार, तो मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ यार इसका, या मैं इसमें चेंजेस कर दूं क्या? पहले क्या होगा, हम जहाँ सम अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे इट विल बी लाइक कि हमारा जो मैक्स सो फार है वो क्या हो जाए, लेस देन सम हो जाए, देन वी विल अपडेट आवर विंडो, है ना। तो वी विल अपडेट एज स्टार्ट इज इक्वल्स टू एस एंड एंड इक्वल्स टू आई। मैं इसका ड्राइन करके भी आपको दिखाऊंगा, राइट? एंड एम एस एफ, मैं एम एस एफ लिख दूँ मैक्स ऑफ आर को, ये अपडेट हो जाएगा सम पे। एंड एज सून एज द सम गोज टू जीरो, दैट मीन्स यू आर कंसिडरिंग दी अनदर विंडो, है ना। आप गार्डियन एल्गोरिथम कोड यार जरूर से देख के आओ, तभी मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ये कंडीशन कैसे चेंज रहेगी, इफ सम इज लेस देन जीरो देन डू टू थिंग्स, पहले तो जीरो साइन करो एंड देन स्टार्ट दी अनदर विंडो, राइट? तो स्टार्ट का पॉइंटर हो जाएगा i+1 पे। मेरे को यही दो चेंजेस लगते हैं करने पड़ेंगे, फिर हो जाएगा। ठीक है यार, तो चलो अब इसका ड्राइंग कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एलिमेंट है -2, -3, 4, -1, 1, 5, 3। इंडेक्सेस मार्क कर लो यार, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो लेट्स से वी सॉल्व फॉर द इंडेक्स 0। तो क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, है ना। एंड मैक्स सो फार जो है हमारा मिनिमम पे बैठा होगा, लाइक माइनस इन्फिनिटी। वी आर कंपेयरिंग माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन व्हाट, व्हाट, -2, है ना। अगर ऐसा है तो वी विल अपडेट इट एज व्हाट, है ना, -2। एंड सिंस सम वाज लेस देन 0, देन वी अपडेटेड एज सम इक्वल्स टू 0, है ना। एंड स्टार्ट इज इक्वल्स टू i+1, सो दैट गोज टू द पॉइंटर 1। ठीक है, ठीक है यार, तो ओके, सो नाउ लेट्स डू द राइट फॉर द फर्स्ट इंडेक्स। तो नाउ सम, तो ये -2 था यार, लेस देन जीरो था, तो ये जीरो, लेस देन जीरो था तो हमने इसको अपडेट करके जीरो कर दिया था, राइट? So it will be like 0 plus -3, that still goes to -3 and we'll update it as 0. But here max so far will be compared again, -2, what, -2 is less than 0, like this, हाँ। तो ये 0 पे अपडेट हो जाएगा। देन सम जो है वो लेस देन 0 था, देन सम इज इक्वल्स टू 0,
and we have an starting index as I plus 1, so that gives us starting index 2. ठीक है, so let's do the join for second index. तो second index हमारा क्या है, 4 को point कर रहा है, so it will be like 0 plus 4, sum हमारा 4 हो चुका है, and max so far हम अपडेट कब कर रहे हैं, जब max so far less than sum हो, तो max so far हमारा क्या है 0 and it is 4, right? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, राइट? तो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे यार, हमारा MSF अब हो गया है 4 एंड वी हैव स्टार्ट इज इक्वल्स टू व्हाट। तो हम जब भी अपडेट कर रहे हैं यार, तो हमें एक विंडो मिल रहा है, राइट? लाइक स्टार्टिंग ऑफ द विंडो। अभी तक -2 -3 था, तो वी हैव स्टार्टेड विंडो फ्रॉम हियर। इससे कहने का ये मतलब है जब भी हम ये अपडेट कर रहे हैं, राइट? तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, एस, जो हमने पीछे से उठाया था, एंड एंड इज इक्वल्स टू व्हाट, हम जिस करंट इंडेक्स पर हैं, है ना? तो अभी स्टार्ट और एंड 4 को ही पॉइंट कर रहा है, बट लेट्स इटरेट फर्दर। ठीक है, एंड सम इज लेस देन 0, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ओके, सो लेट्स इटरेट फॉर इंडेक्स 3 एंड इट हैज वैल्यू एज 1, तो 4 minus 1 that gives us 3, and we have max so far equals to 4, right? So let's compare it with 4 3, so this does not satisfy the equation, right? तो कोई वर्क नहीं होगा, ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा। ठीक है, so let's go to index 4 and we have 2 there. So 3 plus 2 is 5 and max so far was 4 till yet, right? I guess this element was -2. Okay. So okay, so 3 plus -2 that gives us as 3 and max so far is 4 and the sum which we okay, मैंने कुछ यहाँ गलत कर दिया, पहले 3 था, right? So 3 minus 2 it will be as 1, right? Max so far is 3, which is हम इसे compare करेंगे, so nothing happens, right? Now let's iterate for the fifth index. So बस दो index और बचे हैं, उनसे कर लेते हैं. So it will be like 1 plus 1, that gives us 2, and max so far until yet what it was. It was यार, इसमें भी हमारा max so far 4 था, right? तो हम इसे 4 से compare करेंगे. ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी. ठीक है, तो max so far is still 4 and we have to compare with 2, तो nothing here. So 6 index and 2 plus 5 it gives us 7, right? And max so far still yet was what it was. So 2 plus 5 7 and 4 is what? Max so far. We have sum which is greater than max so far, so we have to update something here. So we will say that max so far is now updated to 7 and the starting was still the same as 2, right? And end is equals to, now we have updated this as this one, right? So end will be is equals to 5, right? Okay. Hmm. So end is now updated as okay, so end is now updated as this pointer where we have the element as 5. So this was at pointer 6, right? So end is now updated as 6. Okay, fine. So the last element we have to process now, and that goes as 7, the current sum, minus the 3, that goes as 4. And max so far was updated to 7 here, right? So 7 is less than 4, so it does not satisfy the inequality. We will not do anything here. So we have finally reached our answer. This is our answer, that we have the maximum. अगर आप इस array को consider करोगे, then you will see that you have this sub array which is giving the maximum sum, that is 4 plus 5, 4 plus 5 9, 9 plus 1 10, and 10 minus these two negative elements 3, that gives us 7, right? And we have the starting index from 2 to 6, and we have here at starting as 2 and as 6. So I hope you're getting the logic, and this is the modification that we have to do in our Kadane's algorithm standard code. Okay, so we have understood कि हम एक array दे रखा है, तो हम उसे maximum sub array कैसे निकालें और इसकी indices को कैसे retrieve करें. So let's run the same code for our actual test case, that was 1001, right? And then we will jump on the code part. So let me open the second pane tab. Okay, so let me just copy the pseudo code which I have written here. Okay, done. Fantastic. So
let's dry run for our actual elements. That was 1, 0, 0, and 1, right? And we have this index as 0, 1, 2, 3. Okay. And we replaced with the elements what? We replaced as, I have to see. We replaced that 1 to -1 and 0 to 1, right? And then we have concluded that we just have to find the maximum subarray. So let's do it. It was like 1 to -1 and 0 to 1. ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं ऐसा. So it will be like -1 and 1, 1, -1. So this is our actual elements now. This is our actual elements, and above is the indexes. This is the index. Okay. Now we have to find the maximum subarray algorithm here. So let's continue here. For I equals to 0, right? Sum is equals to what? -1, and MSF was initially pointing at minus infinity. So that will be compared with minus infinity less than -1. So it will be updated as -1, right? And start will be is equals to S that initially points as 0, and end is it will be equals to I that is pointing at 0, right? And since sum is less than 0, then sum will be updated as 0 and start. And we know that since it's 0, then we are not getting any answer, and we have to update our starting of the window to the next pointer. That is goes to I plus 1. So that means 1. Let's do it for the iteration at the first index. Now here, since it was updated to 0, as I already explained in this third part, in the rightmost part, so now sum will be equals to 0 plus 1, the actual element present at the index 1, and that points to 1. Now we have to compare it with MSF, max so far. MSF is what? MSF was pointing to -1, right? So -1 is greater than 1, right? So this is the case. So we will update as MSF is equals to 1, and what? Start is equals to S, and S is pointing at 1. So start is equals to S is equals to 1, and end is equals to I, that equals to the current index, that is equals to 1, right? So we have opened our new window for the sub array, and currently S and E points here, right? Okay, so let's do it for iteration at the second index, and here sum it will be what? I previously the sum was 1, so 1 plus 1, that gives us 2, and what it will be next. So max so far is what? 1. We will have to compare with 1 less than 2. So it is actually satisfying the equality, right? So we have to update it as MSF is equals to 2. The second updation is about the start pointer, that is still the same, that is equals to S, and that initially points to 1. And we have to update the end pointer, that means we are getting new elements having the sum greater than the previous sum. So we'll update it the current index, that is 2. So now the end is pointing not here, the end is pointing here, right? So let's proceed. So now nothing will be here update because since sum is not less than 0. So let's go to for I equals to 3, and it will be 2 minus 1, that gives us 1. MSF previously is 2, and we have to compare it with the current sum that does not satisfy the inequality, and we will not have to do this step also. So we are getting an answer here. So this is our maximum sub array, right, which has the sum equals to 2, and we can just close this window now. And this was the code, and this is the logic. So ठीक है यार, तो अब हम इसे कोड की तरफ करते हैं यार. So this is the exact steps that I have to code in the editor. So let's jump to the coding part now. तो स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं उससे पहले. लेट्स डिसाइड दी स्टेप्स. तो ओके ओके, मैं यही लिख देता हूँ कहीं पे. So step 1 is to handle that all 1, right? All 1. अगर array में if the test case is having all the values as 1, then we have to return -1, right? This will be our step 2, variation of Kadane's algorithm. Will be our code here, right? So I guess that's all. And at the step 3, we have to just return the what? The maximum window, right? So we'll just return start and end. But since the answer is starting from the 1 base indexing and the string has 0 base indexing, so we will return let's say start plus 1, and we will return end plus 1. So ये हमारा, so this will be our step 3. So let's jump to the coding section, man. Okay. So we have to check if the string is having all what? 1. So
we can check alternatively if string is having at least one zero also, then we will say that okay, the string is not having all ones. So let's make a flag variable. Let's say let's make a flag variable with having name is all one, and let's assume that we have all one with an answer one. So let's just iterate in the array for int I equals to 0 to I less than n I plus plus. Whenever we found a 0 in this thing, we will just break it from the break from the for loop, and we'll check outside it. So if str dot char at I is equals to 0, right, we just have to break it from here, break, and before breaking we have to mark that is all one is actually false. It signifies that there is some 0 element in the string. So okay, so we will do it as 0. So we will check outside if is all 1. If it points to 1, that means that in our string every character was 1. So in that case we just have to return -1, right? So let's return type is vector. So let's make a vector here, and let's name it as answer. Okay, if it's all 1, then we have to just add answer dot add -1, and we have to return the answer. That's it. Step 2, as we discussed for the example 1001, right, which was further converted to -1, 1, 1, and -1. And what we did, we find the maximum subarray. And how we jump to this conclusion, I already explained that part, right? Maximum subarray with the indices of the window. It's purely Kadane's algorithm, just a little variation that I explained in the dry run using 2 test cases. That how are we finding the indices of the window. So let's code it. So we will be needing some variables. Max so far, that will be pointing to integer dot min value. We'll be needing to mark the window. We'll be needing a start pointer. We'll be needing an end pointer, right? And we'll be needing one s pointer too. When the sum is less than 0, then we have to update our window to the next pointer for that part. So let's just iterate in this loop for I equals to 0 to I less than n I plus plus, right? Let's start with what? It was sum is equals to plus equals to array of I, right? And then we were sum less than 0, then we were doing some things, right? So okay, let's declare sum here also. Sum is equals to 0, right? So whenever max so far is what, less than sum, then we were updating some things, 3 things, right? We are updating max so far with the current sum that we got, and we were marking the starting indexes as s and ending indexes as the current pointer, right? Now here we have the role of the s pointer in when the sum goes less than 0. So if sum is less than 0, let's make sum as 0, and s will be equals to pointing to I plus 1. That is the next element from where the sum is actually starting, that may have the chance to start as a positive answer. Okay. Okay, so we have handled all the cases. Finally, what we have to do, that answer dot add what, start plus 1. Since the answer starts has this 1 based indexing, answer dot add and plus 1. That's it, I guess. Let me just rectify if I missed some things or not. I guess I have written correct. Okay, so let's compile this code and you see that if we have some okay, there's one major mistake I found. So we haven't mentioned the characters, right? So sum is equals to not array of I. We don't have array here. So I was in the flow of Kadane's algorithm. That's why I made this mistake. So we have string characters, right? So sum str dot char at what I, right? And
we will use here inline if it's 1, right? So we were updating it as -1, and for the 0 we were updating it as 1, right? And since it's the character, then we have to write in this one uh, single quote. Okay, now it seems correct to me. It seems correct. Hmm. At last, we just have to return the answer. Hmm. Everything seems correct to me now. So let's hit the compile button. Okay, cannot find symbol. That's so. Okay, I have used T here as the capital. Okay, so let's compile and run. So everything is working fine. And let's test it for the case dry, dry run for it, right? 1001. As soon as it is compiled, we will just hit the submit button. Fantastic. So it's working fine. And also for the test case which I discussed, that if it be like 100100, so we have to find the maximum sub array, right? And we can see that from the second index to the last index we have the maximum sub array, maximum sub array as 1. That's why it's getting to 2 to 6. So I hope this part is also clear, and let's hit the submit button now. Okay, while the time is getting submitted, let's have a code walkthrough. So what were the initial intuition that we have to find something index L and R so that we can replace it, so that we can complement it, and we can have the maximum ones in our string, right? So we did some uh, what random run, right? Hit and trial method, and we substituted 0 as the -1, and we tried that. Okay, that will not work. Then we substituted 1 as 0 and 0 as -1, so that also we find that we have to maximum array as negative weight. Then we tried the one thing more, that 1 to -1 and 0 to 1, and we finally jumped to a conclusion. Okay, if we have followed this step, we can just find the maximum sub array. So that's the case. So now the question was converted into find the maximum sub array with the indices. So I have already explained the Cadane's algorithm. I'll be attaching that video link in the description as well as in the tags. It will so that's it. So I explained all the driven steps of this maximum subarray using max of r variable and start and end indexes with the slight variation of the cadence, and we did that part and just add the answer into the answer vector we have. Okay, so that's it for this video. So a few last things to say, that this is my GitHub repository. You can start and fork this repository to get help with the source code as well as the syllabus mount mentioned there. And thank you for watching. तब तक के लिए यार अपना बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो और पढ़ते रहो.